डिबगिंग में था। तो hello guys, how are you all? I hope you all must be fit and fine. So what we have done in last session, I think we was discussing two programs, and that is based on loops, and we had discussed these program in for loop, while loop as well as in do while loop. हमने ये प्रोग्राम को हमने में for loop में, while loop में, do while loop में देखा था। ये कौन सा प्रोग्राम था जो हमने लास्ट क्लास में किया था? ये प्रोग्राम राइट अ सी प्रोग्राम टू फाइंड एन सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, जिसमें we had get errors. We had get one error in that. Now I have solved this problem. I have solved this error. मैंने इस error को solve कर लिया है. So basically there is no error. When I turn off the video, or when I restart my system, when I was restarted my system, then suddenly I checked that program that why showing that error, why showing this error, क्यों error दिखा रहा था। तो मैंने चेक किया। After that checking, it see I see that that program is running. There is no showing error. यहाँ पे कोई error दिखा नहीं था। But the problem in that, प्रॉब्लम कहाँ था? प्रॉब्लम डिबगिंग में था। तो जो हम प्रोग्राम कर रहे थे राइट सी प्रोग्राम टू फाइंड द सम ऑफ एन नेचुरल नंबर, तो डिबगिंग में प्रॉब्लम आ गया था। सो दैट्स व्हाई इट्स शोइंग एरर। बेसिकली कोई एरर नहीं था। एक बार मैं चला कर भी दिखा दूंगा। So today now we are going to discuss two more program that is based on loops, and we will discuss in for loop as well, while loop or do while loop. तो आज इन ये दो प्रोग्राम करेंगे। विच प्रोग्राम इज दैट? दैट इज राइट अ सी प्रोग्राम टू डिस्प्ले द इनपुट नंबर इनटू द क्यूब रूट। मतलब कि हम कोई सा भी इनपुट नंबर डालेंगे और उस नंबर का हमें क्यूब रूट निकालना है। ये प्रोग्राम करना है। Second program is that write a C program to make multiplication table. So this program हमें कोई प्रोग्राम मतलब कि इनपुट नंबर डालना और उसका मल्टीप्लिकेशन तैयार करना है। So today we will do these two type of programs. So are you ready? So let's start it. So first of all we will open with Visual Studio Code है। Visual Studio Code ओपन करेंगे। विजुअल कोड खोलेंगे तो यहाँ पे मेरा खुला हुआ, मैंने क्योंकि प्रोग्राम्स कर रहा था इसलिए। हाँ, ये मेरे को दिखाना था ना, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर। बेसिकली यहाँ पे कोई एरर नहीं है। खाता चला के एक बार रन किया। अब देखना रन करने पे कोई एरर नहीं, मतलब कि एरर नहीं दिखाएगा। क्या प्रॉब्लम था? प्रॉब्लम ये था कि अभी रुक जा, मैं दिखाता हूँ। मैंने लास्ट में 8 डाला था ना इनपुट। In last session my input was 8 and it's showing 28. Why? But the correct answer is 36. Why? I will tell you explanation. So यहाँ पे मैं दोबारा से 8 डालता हूँ। Sum of number is 28. मतलब अगर हम नेचुरल नंबर्स के सम करते हैं 1 से लेके 8 तक, तो टोटल उनका कैलकुलेशन आता है 36। 1 to 8 प्लस में एडिशन में कैलकुलेशन आता है 36। लेकिन 36 के बजाय 28 कैसे हो गया? ये प्रोसेस है, जितना भी हम नंबर ले और उसका एडिशन हो जाए। जैसे मैंने 10 लिया और 1 से लेकर 10 तक एडिशन हुआ, और वही 10 के बाद 10 का शायद 55 आएगा मेरे ख्याल से इसका एडिशन टोटल। बट श्योर नहीं हूँ, 55 ही है शायद, कर लेना कैलकुलेशन। आई थिंक 55 है। अगर 55 आता है और मैंने 10 इनपुट लिया है, तो 55 में से 10 माइनस कर दे तो 45 आंसर यहाँ पे दिखाएगा। ये देखते हैं। मैं दोबारा से 10 भी डालता हूँ
देखना 10 में 45 आंसर दिखाएगा। अभी मैं दिखाता हूँ, 10 डाल के देखता हूँ, शायद 55 है मेरे ख्याल से, आई एम नॉट श्योर, बट 10 का पूरा एडिशन 55 होगा। एक बार देख लेते हैं, लेट्स सी, लेट्स चेक इट। यहाँ 10 डालता हूँ, 40, हाँ 55, ये देखा ना, सम ऑफ नेचुरल नंबर इज 45। सो इस तरीके से किसी भी नेचुरल नंबर का सम फाइंड आउट कर सकते हैं। So now let's start it for today's program. So for today's program, create another file, create new file. यहाँ पे नया फाइल क्रिएट करूँगा मैं। तो मैं किस नाम से डालूँ? Which name I will give my file name today's program. So मैं डालता हूँ cube root dot c. Now save this file. After this is saving this, and now what we have to do, we have to include this file. So we have to write include the statement, हमें include statement लिखना होगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ I should include stdio। stdio क्यों लिखते हैं? Why we write stdio? It means that standard input output. Why we write this? Because stdio, when we write stdio, then it's read the print and scan. It means that it predefined the printf, scanf, formatted string, whatever else जो भी होगा ये प्रीडिफाइन कर देगा इसको। यहाँ पे हैश इंक्लूड ओनियो डॉट एच इन ब्रैकेट कर्ली ब्रैकेट ओपन। Now after that, how many I input I will, how many variables I take here? So यहाँ पे मैं दो variables लेता हूँ, input I और cube, semicolon, मैं लिखता हूँ printf, enter the number, enter the number, backslash n, semicolon, scanf, scanf, %d, why I use %d? Because I have taken integer data type, so that's why I use for the %d. That is a format is specified. Now after that I take address variable, address एम्परसेंड साइन इसको कहते हैं। इसके बाद मैं वेरिएबल नेम लेता हूँ जो कि मेरे को इनपुट लेना है, सेमीकोलन। उसके बाद अब मैं लूप लूँगा, आई राइट हियर फॉर लूप, और यहाँ पे लिखूँगा आई इज इक्वल्स टू 1, equals to 1, semicolon, I is less than equals to cube, semicolon, I plus plus, that is increment. For the syntax, initialization, condition, and for update. In update, I use increment statement, and in condition, I write here I is less than equals to cube, and in initialization, I is equals to 1. कर्ली ब्रैकेट लो और यहाँ पे प्रिंट एफ करो, प्रिंट एफ परसेंट, प्रिंट एफ नंबर is percent d and cube root is percent d cube root and the cube root ऑफ कर लगाता हूँ, नंबर परसेंट डी इज परसेंट डी, ठीक है। इसके बाद बैक स्लैश एन, सेमीकॉलम, आई, सेमीकॉलम में भी नहीं, आई एन, और यहाँ पे लेता हूँ आई कॉमा आई कॉमा ब्रैकेट में लेता आई मल्टीप्लाई आई,
सेमीकोलन। ठीक है। उसके बाद आफ्टर दैट व्हाट आई राइट हियर, आई राइट यहाँ पे मैं लिखूंगा गेट, गेट सेमीकोलन रिटर्न, रिटर्न how this program is completed. Now let us see, let us check whether it is completed, whether it is successful or not. So run करते हैं, run में देखते हैं क्या दिखाता है, what we will see in running. तो रन में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं लिखता हूँ 2, the number is 1 and the cube root is 1, the number is 2 and the cube root of the 2 is 8। हो गया ना प्रिंट। अगर मैं यहाँ पे आई एक बार काट दूँ और दोबारा से पेज रन करूँ तो देखते हैं, क्योंकि आई का भी प्रिंट हो गया शायद मेरे ख्याल से, इसलिए मैं दोबारा से देखता हूँ काट के, एक ही बार में आना चाहिए ना। यहाँ दोबारा डालता हूँ टू, नंबर इज, हाँ चलेगा, ये भी चलेगा, दैट्स विल रन। You see that my cube root of the 2 is printed, that is 8। अगर मैं यहीं पे 3 भी डालता तो उसका 27 प्रिंट होता। That same, so this case is basically for loop. So same process will be applied for while loop as well as do while loop. But the changes will be their syntax or format. Like if I take while loop, then I write here while, and before writing a while loop, then I have to write the initialization. So I cut it from here, यहाँ से मैं initialization को कट करूँगा और उसके बाद while के ऊपर मैं initialization लिख दूँगा I is equals to 1 semicolon. After that I also cut update, and update here I write just below the printf statement in the curly bracket. So I write an update, that's the syntax of while loop. Now let's check, now run this program। So run करते हैं तो क्या दिखाता है। अब मैं 3 दूंगा तो 3 में देखते हैं क्या होता है। यहाँ पे मैं डालता हूँ 3। See that the number of the one is 2। अच्छा एक तरीके एक टेबल की लूप में जा रहा है ये, मतलब एक टेबल नहीं कह सकते, लेकिन एक हम जितना भी इनपुट डाले उस पहले से वाला ऑलरेडी इनपुट का उसका भी आएगा क्यूब रूट और 3 का भी आएगा। तो मैंने जैसे 3 डाला, राइट आई टेक हियर इनपुट 3, दैट इज 3, 3 cube root is 27। So from this way you could also print any type of loop, any type of programs in loop। अगर मैं that same cases will be also applied into while loop। So let's see how to do। So I change here some syntax, some format here do, and मैं यहाँ पे कंडीशन को भी हटा देता हूँ क्योंकि कंडीशन में नहीं लगता है, मतलब do में कंडीशन नहीं लगता है, कंडीशन लगता है while में। तो मैं while को लास्ट में लिखूंगा, उसका कंडीशन a is less than equal, sorry, कंडीशन में लिखूंगा I is less than equals to cube, semicolon, put semicolon। Now this completed, now let's check whether it is correct or not। So wait for it for checking, देखते हैं चेक करने। अब मैं 4 डालूंगा,
I take here input that is 4. Now I take here input. So wait for it. 4 का कितना होता है क्यूब 64 होता है. So I write here for 64. It's mean that this program is successfully created. So that is our first program. Now let us go through second program, that is how to create multiplication table in C program using loop, using for loop as well, using while loop as well as using do while loop. So let us check how to do this. So doing things, I create another file और here यहाँ पे दूसरा फाइल मैं बनाऊंगा तो यहाँ पे लिखता हूँ multiplication table, multiplication table dot c. Now save this. After this, saving this one, now you have to write here hash include. You have to include your file, so you have to write hash include stdio dot h. Again, you write it for conio. So I write here hash include conio dot h. ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ int main ब्रैकेट ओपन और यहाँ पे मैं लिखूंगा दो. नाउ आई टेक केयर टू वेरिएबल्स, सो आई राइट इंटीजर डेटा टाइप एंड यहाँ पे मैं लिखूंगा j कॉमा n सेमीकोलन. अगेन मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रिंट टैब, लिखूंगा एंटर एंटर नंबर \n सेमीकोलन f percent d comma address variable that is used for ampersand and n सेमीकोलन. अगेन यहाँ पे लूप लो और यहाँ पे printf एक और बार printf \n और टेक हियर लूप. सो यहाँ पे लूँगा 4 और यहाँ लिखूँगा मैं initialization. So what is initialization? That is j is equals to 1. Now I write a condition that is j is equals to less than 10. Again I write an update that is increment j plus plus. Now take curly bracket and here you take printf statement. So for output, यहाँ लिखूंगा मैं परसेंट डी इस परसेंट डी इक्वल्स टू परसेंट डी. ठीक है, \n. ठीक है, इसके बाद यहाँ लिखूंगा आई एन कमा जे कमा एन इस एप्लीकेशन ऑफ जे ना पुट सेमीकोलन. इसके बाद अब गेट लिख दो, गेट रिटर्न 0. Now this program is completed. Now let us check whether it is correct or not. So let's check it. चेक करते क्या होता है. यहाँ पे मैं नंबर लेता हूँ 5. You see that my multiplication of my number is printed. 5 is into 1 is 5 is 1 equals to 5 to 10. 5 into 5 have to 10, 5 to 15, 5 to 25, 5 to 25, 35, 35, 5 to 45, 45, 5 to 50. It's mean that my input value of the table is printed successfully. So we can print any type of input, we can print any type of multiplication value. यहाँ पे हम किसी का भी मल्टीप्लिकेशन टेबल को प्रिंट कर सकते किसी भी इनपुट वैल्यू का, any type of input value. Now that same cases will be applied for while loop as well as to while loop. So if I applied here while, then I have to change here some condition, some statement here. So
So we have to initialization. Firstly, हमें initialization को पहले ही करना होगा. I write that j is equals to 1 semicolon. After that, cut the update line from the initialization. Now, now right here, update in the just below the printf statement. So यहाँ पे मैं लिखूंगा j plus plus. Now let's check again for the while loop. अब मैं यहाँ पे लिखूंगा 7. यहाँ पे मैं लिया 7. इसमें you see that my table of my 7 is printed successfully. 7 with 7, 7 to 40, 7 to 20, 7 to 28, 7 to 35, 7 to 42, 7 to 49, 7 to 56, 7 to 53, 7 to 70. So that case is also successfully for while loop. Now let us see same case will be applied for do while loop. So I change there some format here. So I write a do while loop statement. After that I cut the condition and I write the condition here after the curly bracket. यहाँ पे मैं condition लिखता हूँ while j is less than equals to n. Now put semicolon. Now run again. So let's check. अब मैं यहाँ पे 9 लूंगा. यहाँ पे मैं 9 लेता हूँ तो 9 में देखते क्या होता है. See that 9 with 9, 9 to 18, 9 to 20, 9 to 30, 9 4 to 30, 9 5 to 45, 9 to 41, 9 7 to 60, 9 8 to 70, 9 8 to 19 to 90. So you see that my table of my input number is 9. It's printed successfully. So from this way, you could also print any type of input value number, any type of table of input value. किसी भी तरीके का टेबल प्रिंट कर सकते हो. Table, multiplication table. So that's it for today. I hope you like my videos very well. If you like it, then please like, subscribe, and share my videos to everyone so that everyone can watch my videos. And if you have got any problem in that, then please comment to me. I will help you out. And if you have also got problem in theory as well as in program, then I will provide you a link in my description. So please go through this link. That will be better for you. And thank you so much. Have a nice day. Take care. Bye bye. See you in next session that is in 2023. So wish you all a very very happy new year to all of you guys. Celebrate your new year. Enjoy your new year. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.